Hi students, my name is Mittu Singh Rawat and we are going to solve this question. A force of 2I plus 3J plus 2K Newton acts on a body for 4 seconds and produces a displacement of 3I cap plus 4J plus 5K meters. We have to calculate the power. We have to calculate the power generated by this force. तो हम लोग करते हैं कि अपन लोग फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, पावर कैसे निकालेंगे. So what do we know about power? Power is capacity of doing work in unit time. So power is what? F dot D is F dot D. That means force into force dot displacement gives us work. Okay, force into displacement gives us work, and this is formula for work. And what do we mean by power? Power is nothing but dW by dt, vW by dt. So if we apply this here, what we'll get? d dt of F dot D. Now what we'll get? What is differentiation of ddx of uv is what? U dv by dx plus v du by dx. This is the formula for differentiating two functions which are in terms of multiples. Okay. So if we apply this here, we'll get f d dt of d. This is the displacement function d. Okay. Then we'll get d dot f dot this much and d dot df upon dt. Now we can see this is a constant force. Why? Because the direction we can find by dividing this by the unit vector in the direction of this vector, and the magnitude of the vector is constant. What is the magnitude? 2 square plus 3 square plus 2 square. So this is the magnitude, and the direct magnitude, both the magnitude and directions are constant. So differentiation with respect to time will yield 0. So we'll finally get f dot d dt of displacement vector. And what is the differentiation of displacement vector with respect to time? This gives us the velocity, f dot v. So we can finally write like this. What we have get? Power is equal to f dot v. We are going to apply this formula here. So we have the force here directly in the vector form, but we do not have the velocity vector in the vector form. So we are going to find the velocity vector. We know what is velocity. The velocity is what? Change of position with respect to time, or displacement divided by time, or displacement divided by time. So this is nothing but 3i cap plus 4j cap plus 5k cap upon 4. Velocity is this much, and force is this much. So we are going to put the values here. 2i cap plus 3j cap plus 2k cap, और जो यूनिट्स है वो हम लोग बाद में लिख देंगे, क्योंकि यूनिट्स तो बाद में क्या आना है पावर का, न्यूटन इंटू न्यूटन मीटर पर सेकेंड आना है, दैट इज व्हाट. तो इंटू डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ओके, अपॉन 4. अब जब हम लोग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है? आई कैप वाले के साथ प्रोडक्ट होता है, बाकी सब का प्रोडक्ट क्या आएगा? आई कैप के साथ 0 आएगा, बिकॉज वाई आई डॉट जे इज 0, बिकॉज आई एंड जे के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है. तो डॉट प्रोडक्ट करने से कॉस 90 कितना आएगा? 0 आएगा. इसीलिए आई, जब हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? आई के साथ आई, तो आई डॉट आई 1 आएगा, आई डॉट जे 0 आएगा, और आई डॉट के भी 0 आएगा. तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली? 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, and 2 into 5
10 upon 4 and the answer will be in watts. So इसको हम लोग करते हैं, कितना आया, 6 plus 12 is 18, 18 plus 10 is 28, 28 by 4 is 7. So the power generated by this force on the body is 7 watt.